want to double your followers and increase your reach on Instagram? If yes, so in today's video, we are going to discuss the amazing strategy that is the 502 strategy. जिस strategy के through आप अपने actually में followers को बहुत ज़्यादा double कर सकते हो और आपकी reach बहुत ज़्यादा increase हो जाएगी. I am also using the same strategy and getting more than 80 to 90 followers every day. So if yes, so do watch the video till end, because in end I am going to share some pro tips, that is the bonus tips for you guys who will be watching the video till end, जिससे कि आप इस strategy को बिल्कुल successfully implement कर पाओगे. So let's get started. So hello everyone, welcome to my channel Digital Shivani, and before starting I will request you, if you are new to my channel, so guys please subscribe to my channel and click the bell button so that you get notified whenever my new video comes. It gives me a lot of motivation जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो it gives me a motivation that I have to keep coming with amazing videos. So before wasting any time, let's get started. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 502 स्ट्रैटेजी. गाइज ये सच में बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी है और आप इससे बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर सकते हो. So now first question is, what is 502 strategy? 502 strategy का मतलब होता है that you have to select 50 posts in a day and you have to give two form of engagement, that is a like and a comment. सिंपल, आपको दिन में 50 पोस्ट सेलेक्ट करने हैं और उन 50 पोस्ट के ऊपर दो तरह की एंगेजमेंट करनी है, जिसकी आपको लाइक करना है और एक वैल्यूएबल कमेंट करना है. तो ये होती है 502 स्ट्रैटेजी. सो नाउ यू विल से मी, ओके शिवानी हमें समझ आ गया है कि 502 स्ट्रैटेजी ये होती है, बट हाउ टू चूज दोस 50 पोस्ट? ऐसा नहीं है दैट यू विल रैंडमली पुट रैंडमली चूज एनी ऑफ द 50 पोस्ट. नो, आपको बहुत ही ध्यान से इन 50 पोस्ट को सेलेक्ट करना है. सो आई विल गिव यू 3 स्ट्रैटेजीज जिससे कि आप इजिली इन 50 पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो. नंबर 1, हैशटैग्स. यू सिंपली have to search the popular hashtags but related to your industry. I'm repeating it again and again. Don't go beyond your industry. अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको हैशटैग्स चूज करने हैं और हैशटैग्स के अंदर आपको रीसेंट टैब में जाना है. 2 टैब्स होते हैं, एक होता है टॉप टैब, एक होता है रीसेंट टैब. सो गो टू द रीसेंट टैब, क्योंकि रीसेंट टैब में आपके ज्यादा चांसेस होंगे कि लोग आपको नोटिस करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी अभी पोस्ट किया है एंड मोर ओवर उनकी फॉलोअर्स, उनके जो लाइक्स एंड एंगेजमेंट होती है वो कम होती है, राइट? तो आपको वहां पे 2 तरह की एंगेजमेंट करनी है, दैट इज लाइक एंड कमेंट. Number 2 is explore page. You can choose some of the post among the 50 from your explore page. Simply go to your explore page and there you must have seen that many posts are ranking, but choose the post related to your industry, whichever you like, and give a valuable form of engagement. Number 3 is the people who are tagging you. You must have noticed कि लोग आपको दिन में बहुत सारे पोस्ट के ऊपर टैग करते हैं, राइट? तो इट्स अ स्वीट जेस्चर कि जो लोग आपको टैग कर रहे हैं आप उनके साथ भी एक नेटवर्क बिल्ड करो और उनको भी लाइक करो, कमेंट करो और एक एंगेजमेंट करो. सो दीज आर द 3 टिप्स जिससे आप इजीली दिन में एक 50 पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो और आपको उन पे 2 तरह की एंगेजमेंट करनी है. So guys, do remember that you have to do it 50 times a day and you have to repeat it daily. So simply now this question is very clear that what is 502 strategy and how to select those 50 posts. Number 1, through hashtags. Number 2, through explore page. And number 3, the people who are tagging you. So that's simple. So guys, now this is the time for the pro tips. As I told you कि in last I will be sharing some pro tips. बहुत सारे लोगों को strategy तो पता होती है, but they don't know that how to implement it properly to get these successful and the guaranteed results. So here are the pro tips. Pro tip number 1. Choose the post related to your industry. Guys, you don't have to go beyond your industry. Like if you are dealing in the makeup industry, तो आप सिर्फ makeup industry के post ही choose करोगे, right? Because if you will be choosing the post like beyond your industry, you will be confusing the Instagram algorithm and they won't be understand कि आप किस industry में rank करना चाहते हो. तो आपको कभी भी अपनी industry से, अपनी niche से बाहर नहीं जाना है. Pro tip number 2. Don't overdo. If I have told you कि guys अगर आपको पता लग गया कि ठीक है
लाइक करने से, इंगेजमेंट करने से आपकी रैंकिंग इंक्रीज हो रही है, आपको अच्छे फॉलोअर्स आ रहे हैं, बट इट डजंट मीन दैट यू विल unnecessarily keep liking and keep commenting on people's post and you are doing it like 100 times or 150 times in a day. It will look totally spammy according to the Instagram algorithm and it will negatively affect your Instagram health score. So guys, kabhi bhi 50 times in a day is enough. आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है, right? And pro tip number 3 is give a valuable comment. आपको इस स्ट्रैटेजी का पर्पस समझना है. The purpose of this strategy is to like आपको followers increase करने हैं, obviously it's very important, but apart from that you have to build a strong community. आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना है, एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है. अगर आप सिंपली ऐसे अननेसेसरीली कमेंट्स कर रहे हो, हार्ट, अ ग्रेट पोस्ट, अमेजिंग, सो देयर विल बी चांसेस दैट पीपल विल नॉट नोटिस यू. ऑब्वियसली वो आपको नोटिस नहीं करेंगे. तो इसीलिए आपको ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इसलिए नहीं फॉलो करना है कि आपको फॉलोअर्स आ रहे हैं, नहीं तो मत करना. यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी बिकॉज यू आर हेयर ऑन सोशल मीडिया टू बिल्ड रिलेशंस, to build a strong community, to genuinely like make relations with other people. तो आपको genuinely जो भी फील होता है पोस्ट के बारे में, आपको उस पोस्ट में कुछ ऐड ऑन करना है, कोई टिप ऐड ऑन करना है, कोई चीज़ इंप्रूव करनी है, तो एक वैल्यूबल कमेंट देना है. आप ऐसे कमेंट्स भी कर सकते हो दैट हे थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग पोस्ट, इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट ऑफ इंक्रीजिंग माई नॉलेज एंड वी आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, आई एम गिविंग यू अ फॉलो बैक, it was a very much wonderful experience to see your content. तो आपको अच्छे से कमेंट करना है, कि अच्छे से 2-3 लाइन का कमेंट करना है, ताकि आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएं दैट द अदर पर्सन विल डेफिनेटली, उसको ऐसा लगेगा कि ओके वी आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, वो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल चेक करने आएगा. मे बी इसीलिए ही आए कि वो आपका कॉम्पिटिटर है, कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आपकी कैसी इंगेजमेंट है, बट डेफिनेटली वो आपकी प्रोफाइल चेक करने जरूर आएगा. एंड आपने उसकी प्रोफाइल पे इंगेजमेंट करी है, सो ही विल और ही और शी विल रिपीट द प्रोसेस एंड दे विल डेफिनेटली गोइंग टू इंगेज विद योर पोस्ट एंड मे बी दे विल फॉलो यू, अगर आपकी प्रोफाइल उनको अच्छी लगी. सो नेवर एवर ऑलवेज डू अ वैल्यूबल एंड अ जेन्युइन कमेंट. सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स इंक्रीज करने के लिए कमेंट कभी भी नहीं करना है, राइट? सो नाउ द प्रो टिप नंबर 4, you have to select the post जिनकी likes and followers आपके account से कम हो. I'm not saying that engaging on the top influencers page is wrong. No, it is also a very good strategy. But today we are discussing about the 502 strategy. And according to this strategy, I will recommend you कि आप उन accounts के साथ ज़्यादा engage करने की कोशिश करें जिनके likes and followers आपसे कम है, right? Because यहाँ हमारा purpose है अपनी reach बढ़ाना, followers बढ़ाना. तो आप अगर बहुत बड़े बड़े पेजेस के साथ इंगेज करोगे तो मे बी आप उनके नोटिस में ना आओ, बिकॉज ऑलरेडी दे आर गेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स, राइट? तो अभी जब आप अपने से कम वाले फॉलोअर्स, अपने कम वाले अकाउंट्स के साथ इंगेज करोगे तो देयर विल बी मोर चांसेस कि वो आपको नोटिस करेंगे कि येस दिस पेज हैज मोर फॉलोअर्स देन मी एंड दे आर इंगेजिंग ऑन माई पेज. तो वो डेफिनेटली आपके पेज के साथ इंगेज करेंगे और मे बी 60-70% चांसेस है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वो आपको फॉलो भी करेंगे, राइट? So yes, so these were the pro 4 tips that always go for like not go beyond your industry. Number 2, don't overdo. Number 3, choose always like give always a valuable comment. And number 4 is always try to engage with the accounts which are having less followers to you according to the 502 strategy, right? That is also a very good strategy. So these are the pro tips for the people who have watched the video till end. So guys, do implement this strategy and grow your followers, and I hope you will do wonders in your digital journey. So thank you so much for watching this video. And if you have not checked my Instagram account, so the link is in the description. You can check out my account because each and every day I keep sharing some amazing tips and strategies related to digital marketing on my Instagram page daily. And guys, do subscribe to my channel and like this video and share it with your friends जिनको actually अपने followers increase करने हैं, अपने Instagram profile की reach double triple करनी है. तो आप जरूर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ यू लाइक द वीडियो एंड गिव मी लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जिन टॉपिक्स के ऊपर भी आपको वीडियोस चाहिए. सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक सम अमेजिंग वीडियोस इन द फ्यूचर. सो थैंक यू सो मच एंड आई विल एंड अप दिस वीडियो विद अ वेरी पॉजिटिव नोट दैट गेट अप and start working on your dreams and let's grow together. Thank you guys. Bye bye. Take care.
So do subscribe to my channel and I will meet you soon in my next video.